Dear students, I am Dr. Tamrakar from Bhartiya College of Agricultural Engineering, Durg. I will teach theory of machine of BTech first year second semester class. Today we will take one numerical, a crank and slotted lever mechanism used in a shaper has center distance of 300 mm between the center of oscillation of the slotted lever and center of rotation of the crank. The radius of the crank is 120 mm. Find the ratio of time of cutting to the time of return stroke. Here, the data given in the question are AC. This AC has been given 300 mm and CB1. This is 120 mm. This is 300 mm. This AC is fixed and BC1 is the crank. So here angle sin CAB1, this CAB1 is equal to 90 minus alpha by 2. As we know, this angle, full angle is alpha. So this from center to point A joining half this angle. So this one is alpha by 2. This is 90. So this angle is 90 minus alpha by 2. Now that is also equal to CB1 by AC. This CB1 by AC is equal to 120 is divided by 300. This value comes 0.4. So angle CAB1 equal to 90 minus alpha by 2. This equal to 0.4 or sine inverse 0.4 equal to 23.6 degree. The value of this in converting sine, this 23.6 degree. So 90 minus alpha by 2 equal to 23.6. So alpha by 2 equal to 90 minus 23.6 equal to 66.4 degree. So alpha equal to 132.8 degree is the answer. As we know here, time of cutting stroke by time of return stroke, time of cutting stroke by time of return stroke. We have to find time of return stroke, that is equal to 360 minus alpha by alpha. Putting the values here, 360 minus 132.8 by 132.8. So this comes
1.72. So you have to solve similar type of questions, and some questions are given in the next some topics. We will continue our next topic. Next is double-sided crank chain, a kinetic chain which consists of two turning pairs. Here, two turning pairs are there and two sliding pairs are used. It is known as double-sided crank chain. Here, the two turning pairs L2 and L1. Okay, link 1, this one, and link 2. There is one turning pair from this point, and L2 and L3, L2, this L2 and L3. This is second turning pair. Means here this pair can be turned, and here this slider and this pair turning can be turned. Okay. Then L3, L4 form one sliding pair. L3 and L4. This is L4, L3, one sliding pair, and L1 and L4. L1 and L4 is second sliding pair. This sliding can slide in this direction, and this slider can slide in vertical direction. This is in horizontal direction. So this all arrangement is called as double-sided crank chain. Some inversions of this double-sided crank chain we will study. First is elliptical trammel. Here, first one is elliptical trammel. This is the instrument is used for drawing ellipse. This one is ellipse, elliptical shape. ellipse यानी अंडाकार होता है, अंडे की जैसा, जिसके दो सेंटर्स होते हैं, एक नहीं दो सेंटर्स होते हैं जिसके. This is obtained by fixing slotted plate L4. ये जो स्लॉट बना हुआ है L4 में, इसको फिक्स कर दिया हुआ है यहाँ पर. The fixed plate L4 has two straight grooves cut in it at right angle to each other. तो ये एक ऐसा ग्रूव कटा हुआ है और एक ऐसा ग्रूव कटा हुआ है यहाँ पर. They are at right angle to each other. Link L1 and L3. अब यहाँ पर आपकी जो लिंक L1 जो है, ये जो है लिंक स्लाइडर, मीन्स दिस वन इज स्लाइडर, लिंक L1. ओके, दिस वन इज स्लाइडर, स्लाइड लाइक दिस. ओके, एंड L3, ये एक स्लाइडर है ए, ये डाउनवर्ड स्लाइड करता है और ये हॉरिजॉन्टल स्लाइड करता है, ये वर्टिकल स्लाइड करता है. ये दोनों आपके स्लाइडर है एंड फॉर्म अ स्लाइडिंग पेयर विथ L4. ये क्या है, L4 के साथ ये स्लाइडिंग पेयर बन रहा है. ये दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं, तो ये जब नीचे आएगा, ध्यान दीजिए, ये ए जब नीचे आएगा तो बी ऐसा बाहर जाएगा, ठीक है, या बी इस साइड में जाएगा, ठीक है, और जब एल ऊपर जाएगा ये फिर वापस आ जाएगा, ठीक है. ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ बार L2. Here link AB, this one AB, L2 is a bar which form turning pair with link L1 and L3. ये L1 L3 में ये खीले की तरह गड़े हुए हैं जो टर्निंग पेयर हैं. मीन्स ये जो रॉड है, ये रॉड B के साथ भी टर्न हो सकता है और A के साथ भी टर्न हो सकता है. सो दिस इज कॉल्ड अ टर्निंग पेयर. ये यूज होता है आपका एलिप्स बनाने के लिए, और ये आपको यहाँ पर इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी बताया हुआ है. दिस वन इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस इज पॉइंट पी. पॉइंट पी को फिक्स किया हुआ है यहाँ पर. एक्स वाई के डिफरेंट वैल्यूज हम लोग देते जाएंगे तो ये एक एलिप्स बन जाएगा, ठीक है. सो दिस इज अ इलेक्ट्रिकल ट्रेमल. When link L1 and L3, this link L1 slide like this and L3 slide like this, their respective grooves अपने ग्रूव में स्लाइड करेंगे ये लोग. So any point on the link L2 such as P, ये जो link L2 है
ये दोनों स्लाइडर को जोड़ा हुआ है बार L2, यहाँ पर कोई पॉइंट P, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, traces out an ellipse on the surface of L4। ये जो है एलिप्स इस सरफेस पर एलिप्स बनाएगा पॉइंट P, ये मूव होते होते में बनाएगा। A little consideration will show that AP and BP are semi-major axis and semi-minor axis। AP and BP are semi-major and semi-minor axis of the ellipse respectively। Let OX and OY here, this is point O, OX and OY as horizontal and vertical axis, and let being link BA, this is the link BA is inclined at an angle theta, here at an angle theta with horizontal। Now coordinates of point P, ये P पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या होगा, ये माइनस डायरेक्शन में x आ रहा है और हाइट में y पे आपका ये y आ रहा है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं P के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो x इक्वल टू, तो ये x आपको निकालना है, तो x क्या होगा, दिस x इक्वल टू पी क्यू, ओके, दिस x इक्वल टू पी क्यू फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज पी क्यू इक्वल टू AP cos theta, AP cos theta, this is angle theta, so this is also angle theta, okay, both are angle theta, so this x can be replaced by AP cos theta or x by AP equal to cos theta, okay, x by AP equal to cos theta। Similarly y, this one is the y, that is equal to PR, y equal to PR, this vertical distance। So in this small triangle, this PR can be replaced by BP sin theta, so y by BP equal to sin theta। Now we will proceed now squaring and adding the values x square by AP square plus y square by BP square, that is equal to cos square theta plus sin square theta, and as we know the value of cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So this is the equation of ellipse, this x square by AP square, y square by BP square equal to 1, this equation is equation of ellipse। Hence the path traced by point P, ये point P है, इसका जो path trace कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, and is an ellipse whose semi-major axis is AP, जो AP है उसका semi-major axis है AP, and जो BP है that is semi-minor axis, ठीक है, AP semi-major axis and BP semi-minor axis। If P is the midpoint of BA, ये BA है, B का यदि P midpoint हो तो इस केस में क्या हो जाएगा, then AP equal to BP, तो ये AP और BP दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये AP और BP दोनों सेम हो जाएंगे, AP स्क्वायर हो जाएगा, that is equal to 1, तो ये AP स्क्वायर वहां चल जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस AP। हमको पता है सर्कल का क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर AP का स्क्वायर, तो ये आपको सर्कल बन जाएगा ये, ठीक है। Hence if the P is the midpoint of BA, ये BA का midpoint आएगा P, then this is जैसे सर्कल, ये पॉइंट P जो है वो एक सर्कल बनाएगा having the radius equal to AP, ठीक है। Then we discuss next. Here this is Scott yoke mechanism. Here this B is fixed, this is link 1, and link 4 frame is fixed, crank AB is attached here, link 2, and here slider link 3. In the 360-degree rotation of this crank, this slider moves up and down, so the
point of A is in a circle, means here one motor is fixed that rotates this crank in circular motion, rotary motion. At the same time, this slider moves up and down to incorporate. Okay, so this piston start moving right side to left side. At this position, if position A is here, this piston will be at here. From here, if this slider goes down, then this piston comes backward direction, left side. This machine is used to convert rotary motion into reciprocating motion. Earlier we have discussed different machines that convert reciprocating motion into rotary motion. This is the machine that convert, this is the mechanism that convert the rotary motion into reciprocating motion. Here fixing L1 or L3. This machine can be possible if we fix L1 or L3. So in this case we have fixed L1, link 1 is fixed, here this one is B is fixed, and L2 crank rotate about center B. ये जो L2 है आपका crank rotate about center B के about में rotate होता है. L4 frame reciprocate, और ये आपको जो L4 frame जो है वो फ्रेम जो है, ये फ्रेम आपको फिक्स है, और स्लाइडर L3 जो है वो रेसिप्रोकेट होता है. दिस वन रेसिप्रोकेट, ठीक है, और ये अप एंड डाउन होगा स्लाइडर, ठीक है. सो हियर नाउ दिस पिस्टन एलिमेंट, दिस पिस्टन goes this direction then back. Okay, by using this stock cord yoke mechanism. Then next is Oldham's half coupling, and Oldham's coupling is used for connecting two parallel shafts. One shaft is driving shaft and second is reverse shaft. They are parallel to each other. The axes are parallel with at a small distance apart. They are having some distance between their axes. Here one and here second one. Okay, there is some distance between the axis of both the shafts. The shafts are coupled in such a way that if one shaft rotates, the other shaft also rotates at the same speed. Okay, this is the compulsion. If this rotates at 100 rpm, then this should also rotate at 100 rpm. The inversion is obtained by fixing link 2. Here, link 2 is fixed. The supporting frame, link 2 is fixed. The shaft to be connected have two flanges, link 1 and link 3. Here, flange 1, link 1, and this one is flange link 3. Link 3 is connected to this one shaft, and link 1 is connected to driving shaft. Rigidly fastened at their ends by forcing. The link 1 and link 3 form turning pair with link 2. This 1 and 3 make turning pair with link 2. Okay, with this link 2. These flanges have diametrical slot cut in their inner faces. ये जो फ्रेंज जो कट हैं, ये फ्रेंज के अंदर में इनर फेस में ऐसा डायमेट्रिकल पूरा स्लॉट कट हुआ है. ठीक है, ऐसे डायमेट्रिकल स्लॉट, वैसे यहाँ पे भी कट है, स्लॉट्स कट है, दिखाया हुआ इधर स्लॉट कट है, मीन्स ये ऐसे दो जुड़ रहे हैं तो इंटरनल साइड पे यहाँ पे स्लॉट्स कटे हुए हैं. ठीक है. देन these flanges have diametrical slot cut at the inner faces. The intermediate piece link 4. Here one more intermediate piece link 4 is used. ठीक है, यहाँ पे link 4 यूज किया हुआ है
यहाँ लिंक 3 है, ये लिंक 4 बताया हुआ है, ये लिंक 1 है, ये वाला आपका लिंक 2 है, दिस वन इज लिंक 4, दिस वन इज लिंक 4, ये लिंक 1 है, ये लिंक 3 है, लिंक 3 लिंक 1 लिंक 4 से कनेक्टेड है। ठीक है। The intermediate piece link 4 which is circular disc have two tongue। जो इंटरमीडिएट है L4 वहां पे 2 टंग है, एक से इसको कनेक्ट करेगा, दूसरे से इसको कनेक्ट करेगा, एक से फ्लैंज 1 L1 को कनेक्ट करेगा और इधर जो टंग रहेगा उससे फ्लैंज 3 को D1 शाफ्ट को कनेक्ट करेगा। T1 have two tongues, T1 and T2। ये T1 और T2 उसके वहां पर 2 टंग है और ईच फेस एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, ये जो है एक दूसरे पे राइट एंगल पे कटे हुए हैं। एज शोन इन द फिगर, द टंग ऑन द लिंक 4 हियर इन द लिंक 4 closely fit into the slot in the two flanges link 1 and link 3। लिंक 1 और लिंक 3 के बीच में 4 वाले पीस को एकदम प्रेशर लगा के फिट किया हुआ है। The link 4 can slide or reciprocate in slot in the flanges। तो ये जो फ्लैंज के बीच में स्लॉट है वहीं पे वो मूव होते रहता है। When driving shaft A rotate, अभी A को आप रोटेट कर रहे हैं, the flange link 1, ये link 1 आपका रोटेट हो रहा है, causes the intermediate piece 4, ये जो है पीस जो 4 जो है इसको ये पकड़ के घुमा रहा है। लिंक 1 जो है ये लिंक 4 को पकड़ के घुमा रहा है। रोटेट एट द सेम एंगल थ्रू विच द फ्लैंज हैज रोटेट, जो फ्लैंज रोटेट हो रहा है उसी से उसको रोटेट कर रहा है। एंड इट फर्दर रोटेट द फ्लैंज डी लिंक 3, ऐसे ही वो डी लिंक 3 को रोटेट कर रहा है एट द सेम एंगल एंड दस द शाफ्ट बी रोटेट, और ऐसा ये आपका शाफ्ट बी भी रोटेट हो रहा है। हैंसिंग 1 3 4, 1 3 and 4 have the same angular velocity at every instant. A little consideration will show that there is a sliding motion between link 4 and each of the link 1 and 3। ये जो आपका बीच में है वो स्लाइडिंग मोशन ऐसा ऊपर नीचे होते रहता है। अपने जो लिंक यहाँ पे स्लॉट है उस स्लॉट में ये जो 4 है वो अप एंड डाउन या लेफ्ट टू राइट ऐसा होते रहता है। एंड ईच ऑफ द अदर लिंक 1 and 3, 1 और 3 के हिसाब से वो चेंज होते रहता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस ऑफ शाफ्ट इज कांस्टेंट, द सेंटर ऑफ इंटरमीडिएट पीस विल डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ डायमीटर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेल ऑफ द टू शाफ्ट। Therefore, the maximum sliding speed of each tongue along its slot is equal to peripheral velocity of the center of disc along its circular path. Here, let omega is equal to angular velocity in radian per second, and d is the distance between axis of shaft in meter. This is the distance between axis shaft in meter. So maximum sliding speed of each tongue, maximum sliding speed of each tongue in meter per second, nu equal to omega d. With this formula we can calculate, and this old Hoffman's coupling is used in many type of automobiles where this type of coupling are used. Okay, thank you.